the iconic Red Fort. Mughal Emperor Shah Jahan moved his capital from Agra to Delhi and laid the foundation stone of the historic Red Fort in 1638. It took about a decade to build this fort. But the history of India's independence struggle, right from the first war for independence in 1857 to the Azad Hind Fauj talking about Chalo Delhi, to every Independence Day, the speeches of Prime Ministers at the ramparts of the Red Fort. The history of the Red Fort and the history of India almost interlinked. The Red Fort of Delhi, witness to the changing fortune of India from the 17th century, is a powerhouse of history of this ancient nation. It's the connecting thread of medieval India to its modern identity in the 21st century. In the 400 years of its existence, it has borne marks of change of empires to the rise of democratic republic of modern India. Back in the 16th century, there was no Red Fort. The Mughals ruled their empire from the Agra fort. Emperor Shah Jahan felt the need to move his power citadel from Agra to Delhi, and the foundation to Red Fort was laid in 1618 AD. लाल किला एक ऐसी इमारत है कि जिसका कॉन्सेप्ट शाहजहां ने 1640-50 के लगभग दिया था और वो सीट ऑफ रूल है। तो वहीं से मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों को भी वही जगह पसंद आई। अगर शाहजहां को पसंद आई तो उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वो जब रूल करने आए तो उनको भी लाल किला बहुत पसंद आया। तो एक इसकी प्रतीकात्मक जो है वैल्यू बन गई है। और यही कारण है कि जो भी प्रधानमंत्री हों, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो लाल किले का जो प्रांगण है, सामने चांदनी चौक का एक तारीखी बाज़ार है, उसके अलावा फिर वहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, सामने लाल मंदिर है, जामा मस्जिद है, और यानी ये जो चांदनी चौक का जो स्ट्रीट है, विंटेज सेलिंग स्ट्रीट, यहाँ पे 7 बड़े धर्मों के जो है स्थल हैं। तो एक प्रतीकात्मक इसकी वैल्यू बन चुकी है, वो रहेगी। The city built inside and around the fort was then called Shahjahanabad. Built over a period of 30 years, the Red Fort was exquisitely decorated with imported silk from China and velvet from Turkey. Spread over 1.5 kilometers, the Red Fort has 2 entrances, the Lahori Gate and the Delhi Gate. During the Mughal era, there was a busy craftsman's market starting right at the entrance of Lahori Gate, leading up to the Chatta Chowk. The market was the treasure trove of jewelleries, carpet, painting and silk. Emperor Shah Jahan ensured that the best craftsmen were brought and settled in and around the Red Fort to serve this market. The road from this royal market leads to Naubat Khana, or the waiting palace. This isolated area was also called Nakkar Khana, where the royal band was scheduled to play 5 times a day, and everyone except the royalty was required to dismount. The Red Fort flourished during the rule of Emperor Shah Jahan. It also saw the gradual disintegration of the Mughal Empire. The British came to India as merchants, and it was here in the Red Fort that the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, lost his empire. The British turned the Red Fort into their garrison after quashing the 1857 mutiny. They destroyed 80% of the pavilions of the Red Fort. The trials of Shahnawaz, Dhillon and Sehgal happened here in the Red Fort, and they were court-martialed in 1945. 2 years later, the Red Fort witnessed the hoisting of the Indian tricolor of the proud independent India. पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज के लिए की एक सहानुभूति की लहर थी, प्रेरणा की भी लहर थी, और लोग आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को या उनके अफसरों को, चाहे वो लक्ष्मी सहगल हों या शाहनवाज खान हों या और लोग हों, उनको बचाने के लिए लोग किसी भी सीमा तक कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। पैसे की ज़रूरत हो तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। जो माहौल था उसमें जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति भी, जो अति लोकप्रिय था, उसको भी अपनी लोकप्रियता पर आंच नजर आती दिखी। तो संभवतः 50 साल बाद जवाहरलाल नेहरू
काली कोट पहनकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों की रक्षा के लिए वकील के तौर पर उस कोर्ट के कटघरे में खड़े हुए हैं। The changing fortune of this country and this fort has been intertwined from the beginning, and the journey continues.